Namaskar dosto. I am Purnima from Fertility Dost and I welcome you yet another session of the day. Ji haan, we had one session at 12 and the second session is at 3. So, in this session, we just discussed a few important pointers. Important इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पता है. पता होने के बावजूद we don't want these things to incorporate in our daily life. But why so? एंड क्या ये सच में छोटी छोटी चीजें और दीज स्मॉल पॉइंटर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट और क्या यही एक वजह है हमारी इनफर्टिलिटी का? मेनी फैक्टर्स आर देयर. वी नो दैट एज के साथ हमारा फर्टिलिटी काउंट कम होता है. वी नो दैट कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है. वी नो दैट मेल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करता है. बट क्यों हर बार ये सब चीजें जानते हुए भी हम कुछ कर नहीं पाते? डू वी रियली नीड अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर दिस? डू वी रियली नीड टू चूज अ बेस्ट डॉक्टर फॉर अस? जी हाँ, ये बहुत जरूरी चीजें हैं एंड वी एज योर दोस्त always emphasize on that. Please choose a right doctor at right time. The doctor you are choosing, the clinic you are choosing is really important. क्योंकि कोई भी जर्नी, कोई भी ट्रीटमेंट आप शुरू करते हैं उससे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस इज रियली इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं है कि हमने 3 महीने फॉलिक एसिड खाया और यूं चमत्कार हो गया. ऐसा नहीं होगा. We really need a good doctor to understand our body parameters. We really need a good diagnostic center to diagnose our issues. डॉक्टर की ज़रूरत है, अच्छे सेंटर की ज़रूरत है, उस डॉक्टर की जहाँ पे अच्छा लैब हो, वो डॉक्टर जो आपको समझे. इसीलिए आज हमने सोचा कि हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाते हैं जो आपके इश्यूज को, आपके कंसर्न्स को समझेंगे और समझने के साथ साथ शी विल गाइड यू प्रॉपरली थ्रू आउट दिस. अगर आपको लगता है आपका छोटा कोई कंसर्न है जो आप डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आपको लगता है दे आर रियली इंपॉर्टेंट बट यू आर नॉट एबल टू डिस्कस दोज पॉइंटर्स विद योर डॉक्टर, और कहीं किसी से बात करते हुए भी कभी हमारे मन में कोई डाउट आ जाता है, तो उन सब डाउट्स को, उन सब पॉइंटर्स को, उन सब इश्यूज को, उन सब कंसर्न्स को आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करना शुरू कीजिए. और अगर आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑन दिस फेसबुक लाइव, यू जस्ट सेंड अ मैसेज ऑन आवर ऑफिशियल नंबर. आप वहां पे पोस्ट कीजिए और हम यहाँ पे आपके उन सवालों को एनोनिमसली पूछेंगे. बट आप प्लीज इस सेशन में बने रहिए और ये सेशन जरूर देखिए, because in this session we are going to discuss very important pointers related to male and female infertility. वैसे I don't prefer to call it infertility, this is fertility, right? fertility है. And अभी शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू थैंक यूएनएस फॉर अरेंजिंग सच वंडरफुल सेशंस. यूएनएस हमारे लिए हमेशा इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को लेकर आए हैं और यकीन मानिए हमारे कम्युनिटी, हमारे मेंबर्स को बहुत हेल्प हुआ है उन सब से. तो आज भी यूएनएस हमारे लिए डॉक्टर ज्योति बाली को लेकर आए. सो व्यूअर्स, लेट्स invite our doctor to the main screen and let's start the discussion with her. Thank you so Namaskar, much, doctor. Purnima and Fertility. Good afternoon, good inviting evening. me. Thank you, ma'am. Thank you so much. And viewers, for you जो I think Delhi NCR के हैं वो सब आपको नाम से जानते हैं. For other viewers, I must introduce Dr. Jyoti. Dr. Jyoti is a director of Babysoon Fertility and IVF Centre. जैसे कि नाम इंडिकेट करता है Babysoon. So if you are planning a family or you are thinking of any treatment, just do visit Dr. Jyoti. Dr. Jyoti is a vice president of Delhi Gynae Forum. She is a joint secretary, National IMA Women Wing. She is a recipient of Nav Shakti Award, Pride of India Award for IVF, and Dr. APJ Abdul Kalam Appreciation Award. And experience की अगर हम बात करें तो she has 2 decades of experience in this field. So people, please don't hesitate to post your queries. आप ज़रूर बात करते रहिए, हमारी बातों को सुनते रहिए, डाउट्स पोस्ट करते रहिए.
एंड विद डॉक्टर ज्योति आज हम बात करेंगे कि व्हाई इनफर्टिलिटी इज ऑन द राइज। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें कहीं ना कहीं पता हैं, लेकिन क्या सच में वही चीजें हैं? और अगर ऐसी चीजें हैं, दीज आर द रीजंस, सो हाउ टू डायग्नोज दोज रीजंस एंड रेक्टिफाई दोज रीजंस, ताकि आपकी पेरेंटहुड की जर्नी बहुत अच्छे से निकले। सो वेलकम डॉक्टर ज्योति एंड ओवर टू यू मैम। Thank you, Purnima and Fertility Dost, for inviting me here. And I think we just got over with the Fertility Awareness Week. And it is very important कि इंडिया में भी हम लोगों को इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ती जा रही है। आईवीएफ को मार्केट में आए हुए 40 साल से ऊपर हो गए। इंडिया सेकंड कंट्री थी इन द वर्ल्ड जिसने आईवीएफ को किया था। इंग्लैंड के बिल्कुल 68 डेज बाद इंडिया के डॉक्टर ने आईवीएफ कर दिया था, सक्सेसफुल आईवीएफ फ्रॉम कैलकाटा, डॉक्टर मुखोपाध्याय, who got posthumously awarded. So India was second in the world and only 67 days behind the world. London was the first place. So having said this, that India is proud to be in the IVF market for so many years, हमारी कुछ जानकारी अभी भी complete नहीं है आम जनता के लिए। फर्टिलिटी क्यों राइज पे, पहले इस पे आपके सवाल पे बात करते हैं पूर्णिमा जी। फर्टिलिटी राइज पे इसलिए है कि देखिए आजकल लड़कियां भी अपना करियर बनाना चाहती हैं, बराबर खड़ा होना चाहती हैं, फिर माता पिता भी फिर शादी करना चाहते हैं उनकी। अब लड़कियां हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती हैं। तो एक मेल्स के लिए एज फैक्टर मायना नहीं रखता, 25 पे हो शादी या 30 पे हो या 32 पे हो, इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए उनका एक लिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव होते हैं। अंडे बनाने की क्षमता डिसाइड हो जाती है जब वो अपने माँ के गर्भ में होती है। ओवरी की जेनेटिक प्रोग्रामिंग तभी हो जाती है। तो लड़कियों के लिए एज बहुत मायना रखती है। और आजकल के चलते लड़कियों की शादियां लेट हो रही हैं, करियर के चलते, या फिर उन्हें राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है। अरेंज मैरिजेस इतनी इजीली नहीं हो जाती है, तो हर कोई अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना चाहता है। करते कराते कहीं वक्त निकलता चला जाता है। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके चलते तो मैं यही कहूंगी कि एक प्रक्रिया होती है, एक टेक्निक है oocyte फ्रीजिंग की। आप अपने अंडे फ्रीज करा सकते हैं, फिर आपके पास टाइम है कि आप अपना मनपसंद जीवन साथी भी चुने, अपना करियर भी सेटल कर लें। और शादी अगर लेट भी होती है मान लीजिए, तो आपके पास ये अंडे जिस उम्र पे फ्रीज किए गए, इनकी एज वहीं रह गई। मान लीजिए आपने 32 पे कराए और आपकी शादी 35 पे हुई, तो इनकी एज तो नहीं बढ़ेगी, ये 32 पे ही रहेंगे। आप चाहे 35 की हो जाए, आपके पास बिल्कुल टाइम है, फिर आप बाद में कर सकते हैं प्लानिंग। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा आपकी फर्टिलिटी को। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर। हम सबके आजकल अगर आप देखें तो लाइफस्टाइल क्या हो गए, सारे टाइम गैजेट्स के साथ, फोन, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, और स्पेशली पीपल वर्किंग इन एमएनसी, दे आर यूजिंग दीज गैजेट्स। लैपटॉप्स को लैप पे रख के काम करना, लंबे समय तक काम करना, नाइट शिफ्ट्स में काम करना, एक रेस भाग रहे हैं जिंदगी की। तो क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है? क्या हमारी फर्टिलिटी के लिए अच्छा है? नहीं। हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें टाइम निकालना है अपने लिए, एक मी टाइम। मेल्स के लिए भी जरूरी है, फीमेल्स के लिए भी जरूरी है। फिर आते हैं डाइट पे। डाइट के साथ क्या करेंगे? हम अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट रखें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करें, और जो कि खास करके वेजिटेरियन है लड़कियां, विटामिन D3, विटामिन बी ट्वेल्व वेजिटेरियन डाइट में होता नहीं है। और ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कि हमारी रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। सो विटामिन B12 का सप्लीमेंट जो वेजिटेरियन लोग हैं वो जरूर लेंगे। और विटामिन D3 सनलाइट में मिलता है, लेकिन हमें तो सनलाइट में जाना ही नहीं है। एसी कार में बैठना है, एसी ऑफिस में बैठना है, और बाहर निकलना ही नहीं है। धूप में जब निकले तो कवर कर लिया, सनग्लासेस पहन लिए। एक्सपोजर टू सनलाइट हमारा सबका अपने लाइफस्टाइल के चलते चलते जीरो ही होता चला जा रहा है। तो सनलाइट मिलेगी कैसे, विटामिन D3 मिलेगा कैसे? या तो आप सप्लीमेंट लेंगे या फिर आप थोड़ा धूप सेकेंगे। और अक्सर देखा जा रहा है कि पैंडेमिक हो गया है ये तो, कि विटामिन D3 कम ही होता है। तो जब आप पेरेंट्स बनना चाह रहे हैं या आप कंसेप्शन चाह रहे हैं, तो विटामिन D3 लेवल जरूर चेक कीजिए और सप्लीमेंट लीजिए। विटामिन B12 जरूर सप्लीमेंट कीजिए। लाइफस्टाइल भी अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट जरूर ऐड कीजिए। एक बैलेंस डाइट लेंगे आप, और अपनी दिनचर्या ठीक से मैनेज करें कि 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर आप लेट नाइट उठ रहे हैं, लैपटॉप्स पे देख रहे हैं, मोबाइल पे मूवीज देख रहे हैं, और आपका सिस्टम जो है 8 आवर्स की स्लीप का नहीं है, तो वो भी रिप्रोडक्शन पे असर डालता है। हार्मोन्स रिलेटेड है ब्रेन से, पिट्यूटरी से, जो कंट्रोल करते हैं हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम,
सो कहीं कहीं ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है अगर हम टाइम पे नहीं सोए या टाइम पे नहीं उठे. एंड some exercise regimen needs to be in place. So, because when we are trying to be parents or when we are trying to conceive, some exercise regimen to keep you going, to keep your life going, and stress levels to be managed, it is a task by itself. So you need to consult your doctor, sit down and understand how to plan, how to go about it, how to manage your day-to-day life and your stress levels. These small factors do contribute to the results and the long-term planning. It is not only the medication written on my prescription or any doctor's prescription which is the only thing that is important. दवाई लिख दी लेकिन अगर आप इतने स्ट्रेस में हैं कि आप उसको टाइम से नहीं ले पाते, आप भूल जाते हैं, आप अपसेट रहते हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा आपके ट्रीटमेंट पे वो आप खुद समझदार है. सोचिए इसके बारे में. सो डॉक्टर बाली, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये छोटी छोटी चीजें, दीज माइनर डिटेल्स वी ऑल नो, बट वी टेंड टू इग्नोर इट. Yes. एंड जैसे आपने बताया कि रियली इट इज इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो कि जब भी हम सोचें कि यस वी आर नाउ रेडी फॉर फैमिली, वी शुड गो अहेड. So before meeting your doctor or after meeting your doctor, what are the important tests that a male and female both need Very to good undergo? question, Purnima. Very good question from you, Purnima. Very relevant question. See, my advice to the younger couples who are getting married before 13, I would say please try for 1 year without using any contraceptives. कोई भी गर्भ निरोधक यूज किए बिना आप 1 साल तक के लिए लगातार जब ट्राई कर रहे हैं और फिर अगर आपकी कंसेप्शन नहीं हुई उस 1 साल के दौरान, तो आप इसको लेबल कर सकते हैं कि हाँ अब मुझे जरूरत है एक डॉक्टर को विजिट करने की या टेस्ट कराने की. अक्सर मैं देखती हूँ अपने ओपीडी में कई बार लड़कियां आ जाती हैं कि मैम जस्ट टेस्ट कर दो, एंजाइटी हो रही है, मैंने घर में किसी को नहीं बताया है, या उनकी मदर उनको लेकर आएंगी या मदर इन लॉ लेकर आएंगी. तो मेरा सभी को ये जवाब है कि पहले लड़की से शुरू नहीं होती है इन्वेस्टिगेशंस. हमेशा सीमेन एनालिसिस यानी वीर्य परीक्षा फॉर अ मेल विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द ट्रीटमेंट. इस पूरी एक इन्वेस्टिगेशन पे पूरी प्रक्रिया डिपेंड करेगी कि हम क्या टेस्ट कराएंगे, कैसे इसको पूरा प्लान बनाएंगे. तो सबसे पहले तो मैं मेल्स के लिए कहूंगी कि they should be the ones to come forward first to find out whether their semen analysis is normal or not. हम अक्सर लड़की को पूछते हैं कब गुड न्यूज दे रहे हो. I think the trend should change now. Ask the boy Yes. in the house, the male in the house, when are you giving her good news, so that he should get pressurized to get his semen analysis done and before asking his wife. So or both of you come together, because counseling together for a couple is very very important. So semen analysis, Purnima, will be the first test that I would want, and not from a pathology lab. I would want from a fertility center, because हमारे करने के तरीके में और उनके करने के तरीके में फर्क होता है हमारी लैब्स के प्रेपरेशन के मेथड में. मेरी लैब में जैसे बेबीसून में हम लोग टीवी की स्क्रीन पे दिखाते हैं कि कितना काउंट है, कितनी मोटिलिटी है, कितनी मॉर्फोलॉजी है काउंट की. उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि कंटेनर हमारा स्टेराइल कंटेनर दिया जाता है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है फॉर सीमेन, एंड द सैंपल इज टेकन here in the center itself. It is not brought from home, क्योंकि टेम्परेचर चेंज भी उसका जो होता है उसका रिजल्ट वेरी कर जाएगा. आप घर से लेके जा रहे हैं सैंपल तो वो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा. तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि पैथोलॉजी लैब वाले माइंड नहीं करते, बट हम फर्टिलिटी सेंटर्स में हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा स्पेशलाइज्ड काम है. तो इस सीमेन एनालिसिस कराने से पहले हम 4 वायरल मार्कर्स मांगते हैं, HIV, HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और VDRL. ये इन्फेक्शंस हम रूल आउट करते हैं बिफोर सीमेन सैंपल अपनी लैब में लेने के लिए, क्योंकि जो कर रहा है टेस्ट उसकी भी सेफ्टी और जो बाकी लोग हमारी लैब में टेस्ट करा रहे हैं कोई भी इन्फेक्शन फैलना नहीं चाहिए. इसलिए ये क्रॉस चेक पहले ही बैरियर लगाते हैं कि ये 4 टेस्ट कराएंगे. और 5वां दोस्त अभी आ गया है 2019 से, दैट इज कोविड टेस्ट. सो COVID-19 इज ऑल्सो डन सिंस कोविड केम इन. तो अब ये 5 टेस्ट जरूरी हो गए हैं ब्लड के, और ये कोविड 4 ब्लड के टेस्ट और ये कोविड टेस्ट कराने के बाद एंटीजन की रिपोर्ट के बाद हम सीमेन एनालिसिस करते हैं. इस सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट पे निर्भर करता है कि अब हम उस लेडी को क्या इवैल्यूएशन बताएंगे. तो बेसिक टेस्ट अगर हम एक लड़की के लिए बात करें पूर्णिमा जी, तो इट विल बी अ blood test called AH, anti-Mullerian hormone. It is a blood test which can be done on any day of the cycle, यानी periods के किसी भी दिन पे हम कर सकते हैं. सिंपल टेस्ट है ये.
और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अगर मान लीजिए आज मैंने अपने ओपीडी में 3 लड़कियों को देखा जो 30 साल की, और तीनों का मुझे एएमएच कराना है कि जैसे कि एक किसी लेडी को सेम साइज ऑफ कपड़े फिट नहीं आएंगे, ऐसे ही हम्म, 3 30 साल की लड़कियों का एएमएच सेम नहीं हो सकता, यानी उनकी अंडा बनाने की क्षमता जरूरी नहीं है सेम हो, क्योंकि वो तीनों 30 साल की हैं। तो एएमएच राइट, मुझे ये बताएगा कि एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आज मैंने तीनों को देखा, आज मैंने तीनों का एएमएच कराया, तीनों 30 साल की हैं, लेकिन उनकी अंडा बनाने की क्षमता तीनों की अगर अलग अलग है, तो मेरी एडवाइस उनके ट्रीटमेंट को लेकर अलग अलग हो सकती है। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है, क्योंकि ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। जैसे कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, ऐसे ही ओवरी में पुअर रिस्पॉन्डर है जो आपकी 30 साल की उम्र के हिसाब से उसका रिस्पॉन्स हम कम एक्सपेक्ट करेंगे, या किसी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है 30 की एज के हिसाब से, या किसी का ज्यादा है, यानी ज्यादा अंडे बनाने की क्षमता, यानी वो पॉलीसिस्टिक ओवरी में है फीचर्स उनके, तो वो उस तरह से हम्म, कैटेगराइज कर दिया जाता है हमारे लिए। और फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस रखते हैं सामने, एएमएच वैल्यू सामने रखते हैं, और एक डे 2 पे या डे 3 ऑफ द पीरियड्स पे एक ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड इज डन बाय अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कि हमें दिखाई क्या दे रहा है, ओवरी में कितने एंट्रल फॉलिकल काउंट, यानी कितने अंडे बनाने की क्षमता दिख रही है उस ओवरी के अंदर, यूट्रस नॉर्मल है या नहीं है। ट्यूब्स तो हम अल्ट्रासाउंड पे देख नहीं सकते हैं। फिर अगर ये राइट, सब कुछ नॉर्मल लगता है हमें, तो फिर हम आगे प्लान करते हैं कि ट्यूब टेस्ट कराएं या ना कराएं। अगर 30 से कम की उम्र है तो हम ट्यूब टेस्ट कराना प्रेफर करते हैं। कोई और फैक्टर साथ में, तो हम हो सकता है हिस्टोलैप्रोस्कोपी एडवाइस कर दें उस पेशेंट को, या मे बी थोड़ा सा किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मे बी वी मे जस्ट गाइड देम विद सम ओव्यूलेशन प्रॉब्लम हो रही है, अंडा टाइम पे नहीं बनता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, वी मे पुट देम ऑन सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, गिव देम सम टैबलेट्स की अंडा टाइम पे बने, अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग पे डाल सकते हैं, और मे बी टाइम्ड इंटरकोर्स, यानी उनको आपस में डेज बताएं कि कब ट्राई करना है। अब एग मेच्योर हो गया, रप्चर हो गया, इंजेक्शन दे दिया हमने, और थोड़ा मेडिकल सपोर्ट मिल गया, या फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अगर कोई फैक्टर निकलता है, मान लीजिए कोई सीमेन काउंट में कोई बॉर्डर लाइन डिक्रीज काउंट है, तो आईयूआई कर सकते हैं, जो कि ट्रीटमेंट होता है जहां पे आपने मॉनिटर किया, अंडा देखा अल्ट्रासाउंड पे कि फॉलिकल बन रहा है, उसको रप्चर करने के लिए इंजेक्शन दिया और सीमेन को प्रिपेयर किया लैब में, और फिर अंदर यूट्रस तक रख दिया। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो रही है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ नेचुरल कंसेप्शन। नेचुरल एंड आईवीएफ इज समथिंग जहां पे, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, या एज ज्यादा है, या सीमेन काउंट बहुत कम है, वहां पे हम लोग आईवीएफ की जब सलाह देते हैं किसी भी इंडिकेशन के चलते, आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। शब्द विट्रो का मतलब है बॉडी से बाहर, यानी आपने अंडे को भी बाहर निकाला, सीमेन भी बाहर प्रिपेयर किया, उनको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज बनाए लैब में, और फिर वो एम्ब्रियोज वापस यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। सो दैट इज आईवीएफ। सो डॉक्टर बाली, जैसे आपने आईयूआई एंड आईवीएफ यू जस्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट जो कि आप भी बात कर रहे थे, पेटेंसी टू चेक द पेटेंसी ऑफ टेस्ट ट्यूब। यस, यूजुअली लोगों का ये कहना है कि अल्ट्रासाउंड में तो सब ठीक आया, तो मैं कैसे मान लूं कि इस टेस्ट के लिए जाना जरूरी है। सो यस, हाउ यू डील विद सच पेशेंट्स, बिकॉज वेरी गुड उनको क्वेश्चन अगेन। समझाना इज वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स। अब अल्ट्रासाउंड पे हमें ट्यूब्स दिखाई नहीं देती, क्योंकि ट्यूब्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो हमें अल्ट्रासाउंड पे दिखाई देनी भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड पे ट्यूब्स दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब उसमें पानी भरा हुआ है, हाइड्रोसैल्पिक्स दिखाई देगा ट्यूब्स के अंदर, तो वो अपने आप में एक फाइंडिंग है जहां हिस्टोलैप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी हमें, तो वो तो अलग एक केस हो गया। और ट्यूब टेस्ट जब हम कराते हैं, दो प्रकार के ट्यूब टेस्ट होते हैं, यंगर पेशेंट्स विद एवरीथिंग एल्स नॉर्मल, and patient is not able to conceive in spite of good number of follicles, ovulation happening on time, semen का count normal है, तो HSG एक टेस्ट होता है, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम। इसमें एक डाई डाली जाती है बच्चेदानी के नीचे के रास्ते के द्वारा, और फिर एक्सरेज लिए जाते हैं जब ये डाई पुश कर रहे होते हैं कि ये ट्यूब्स के द्वारा बाहर स्पिल होती है या नहीं होती है। तो अगर ये स्पिल होती है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल ट्यूब्स है जो खुली है। अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आता है HSG टेस्ट में, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 100% ब्लॉक्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट तो फिर लैप्रोस्कोपी ही होगा, जिसपे हम 100% कंफर्म करेंगे कि ये खुली है या बंद है। बट अगर एचएसजी पे ट्यूब्स खुली की रिपोर्ट आती है, तो ये श्योर है कि ट्यूब्स खुली। डॉक्टर बाली, एट टाइम्स रिपोर्ट में ये लिखा होता है लेट स्पिल और डिलेड स्पिल, सो हाँ व्हाट जी, डज दिस लाइन इंडिकेट्स? that means to say there could be some
या तो करने की टेक्निक में कोई प्रॉब्लम आई है, रास्ता आपको प्रॉपर नहीं मिला, या वो इंजेक्ट आप नहीं कर पाए, पेशेंट को पेन बहुत था उस समय, या फिर ट्यूब में वाकई में कोई पैथोलॉजी है जहाँ पे मतलब उसकी मूवमेंट स्लो थी, सो दैट कुड बी अ डिजीज ट्यूब ऑल्सो. Okay, right. So we need to investigate such tubes further. Further, yes. If the patient Uh, is not conceiving, the gold standard will be laparoscopy and hysteroscopy, along with in a case of infertility. Right. So, Dr. Bali, we have one query related to ectopic pregnancy. So, the Yes. lady is asking why it is happening. She had two ectopic pregnancies और अब उनकी दोनों ट्यूब ही खराब हो गई हैं. Obviously, the option is available to her is now IVF. But she is asking कि उनका ectopic हुआ क्यों? उनको ऐसे लग रहा है कि अगर आईवीएफ करवाएंगे तो भी क्या एक्टोपिक होने के चांसेस हैं. अब तो क्या, अगर डिपेंड करता है ट्यूब्स ब्लॉक कर दी गई है या रिमूव कर दी गई है, वो केस हिस्ट्री देखनी पड़ेगी. बट एक्टोपिक होता क्यों है? Ectopic is, what is ectopic? A pregnancy which implants any other place in the body other than the uterus. It can, most common site is tube. अक्सर ट्यूब में होती है, कई बार ओवरी में भी चली जाती है ये प्रेगनेंसी, कई बार पेल्विक में भी होती है, रेयर केसेस होते हैं वो, बट सबसे पहली साइट जो होती है वो ट्यूब है, जो सबसे ज्यादा देखने को सुनने को मिलता है हमें, ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है. या तो वो ट्यूब कभी डैमेज रही हो, उसका फंक्शनैलिटी डैमेज हो, कि सीलिया अंदर जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो स्लो मूवमेंट थी, वहीं अटक गई, आगे वापस वो यूट्रस तक इम्प्लांट होने के लिए आया ही नहीं एम्ब्रियो, तो वहीं बढ़ना शुरू हो गया वो. दैट कुड बी वन. कभी इन्फेक्शन रहा हो सकता है बचपन में, इंडिया में तो कॉमनेस्ट कॉज कुड बी ट्यूबरक्लोसिस or chlamydia infections or any other infection which was there. So this is one of the commonest causes why ectopics happen. But ectopic pregnancy is commonest in tube, then ovary, then other sites. एंड ओके आईवीएफ के एंड बाद भी एक्टोपिक्स होती हैं, बट ऐसे केसेस में जहां दो बार एक्टोपिक पहले हो चुकी है, वी वुड ऑलवेज वांट टू ईदर क्लिप द ट्यूब्स, कि उसको क्लिप कर दिया जाए लैप्रोस्कोपी से कि चांस कम रहे, और अगर रिमूव हो चुकी है ट्यूब्स प्रीवियस एक्टोपिक सर्जरीज में, तो देन ऑफ कोर्स द चांस बिकम्स नेग्लिजिबल. right, right. Doctor, another question is related to hypertension. So, क्या इफेक्ट है हाइपरटेंशन का both in female and males? Hypertension in women, see again, pregnancy will become high risk because the growth of the baby will not be, normal. It will be an IUGR, intrauterine growth retardation. So premature deliveries, time se pehle delivery, फिर baby का NICU admission, so management becomes difficult. So these things need to be taken care of. And even pregnancy or no pregnancy, for general health, you tell me, heart disease, heart attacks at younger age, who wants to be hypertensive? Who Right. wants to be hypertensive? So And lifestyle अगर आप monitoring has become the mainstay there. बिल्कुल And of एग्री. course, you have to be very careful about your own health. So, ma'am, if the person with high BP is trying for conception, तो क्या ऐसी precautions हैं जो उसको लेनी चाहिए? They have to be under their physician. BP has to be controlled, and they have to tell the person that these are I am trying to now become a parent. So medicines will be changed accordingly, and BP will have to be managed, monitored, and brought down to basics. They have to stabilize it, and before conception. And the Okay. two doctors should be in touch, so that we also know before doing it that yes, this person is under this treatment, BP is controlled. So we need to be aware of the fact that this person is on antihypertensives, and antihypertensives will be changed, and safe medication will be given which are safer in pregnancy, and it will not cause any harm to the fetus. Right. So viewers, just take a note on these important factors. हमको सब पता है, but कहीं ना कहीं we are missing these things. So if you are having any conditions, आपको hypertension है, diabetes है, thyroid है, कुछ भी है, so please आप अपने डॉक्टर से खुल के बात कीजिए, सारी चीज़ों को खुल के बताइए ताकि डॉक्टर आपको properly guide कर सके. And conception is really important for you, so for your doctor always note, take a note on this. Dr. Bali, we'll ask one query from here. Let me just Hanji. So age is 30, AMH is 0.42, 4 IUI failure and 1 IVF single transfer, only 3 embryos, 2 good quality, 1 average. Now please suggest what next treatment should be. At 0.42, I would suggest that
Either you go for one. I mean, this should have been where we can pool the embryos. If there were two good quality embryos, I before transferring, I would have done embryo pooling, done one more IVF cycle and pooled the embryos if there were good quality embryos. And that is called as embryo pooling. यानी आपने दो बार IVF किया, अंडे इकट्ठे किए, एम्ब्रियोज बनाए और उनको मल्टीपल सेट्स बना के 3 IVF तक हम एम्ब्रियो पूलिंग कर सकते हैं, जहां AMH 0.42 का है, provided the record here saying 2 good quality embryos were there, then embryo pooling should be the first choice. If not, the last resort in these cases will become donor egg. You will have to take an egg from somebody else, sperm of your husband, and uterus आपकी अपनी होगी, deliver आप ही करें. बट डॉक्टर आजकल डोनर साइकिल को भी लेके कुछ इश्यूज हैं आफ्टर एआरटी बिल. सो क्या ये सच में खत्म होने वाला है या डिलेड होने Let वाला us है? wait, Purnima. Let us wait for the final declaration by the government of India. Whatever is the rule of the country, rule of the land, we all have to respect it and follow it. There are राइट, no two बिकॉज ways about it. बहुत सारे लोगों के मन में ये डर है कहीं ना कहीं कि क्या होगा अगर डोनर साइकिल्स रुक जाएंगे. हमारे मन में भी है. Let's hope and pray that ART in India is progressive and not regressive, but we will have to respect the law of the land and we will all abide by it. There are no two राइट. ways. And if you are in the session, you must have heard Dr. Jyoti's response. Please ask your doctor. And अगर आप Delhi में हैं, तो you can anyways visit Dr. Bali and let us know if you want to connect with her. We'll directly connect you with her. And जैसे कि आपका AMH low है, तो we won't suggest you to waste more time because time is really important. Very much. Uh, And Dr. you had Bali, spoken about thyroid. I'll add something here, Purnima. Thyroid hmm, levels for a normal person, the upper range of the lab is 5 or 5.5. But when you are trying to conceive for a woman, the TSH levels should be 2.5. okay, okay. That is also, I Very think, very important. important. Right, right, right. Very important. So viewers, please take a note. और अगर आपने ये मिस किया है शुरू में सेशन, तो ये सेशन हमारा इसी लिंक पर सेव्ड रहेगा. प्लीज इसको शुरू से जरूर देखिएगा बिकॉज इन द स्टार्टिंग डॉक्टर बाली डिस्कस्ड वेरी फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स. कुछ कम पॉइंटर्स हैं लेकिन वो इतने अच्छे पॉइंटर्स हैं कि दे विल हेल्प यू इन कंसेप्शन. सो प्लीज डोंट मिस द सेशन. एंड डॉक्टर बाली यूजली फीमेल की अगर हम बात करें फीमेल इनफर्टिलिटी को लेके, तो जब AMH की बात आती है तो नेक्स्ट थिंग इज वी गो फर्दर विद दिस, देन इट इज AFC. So now earlier the people were more focused about AMH, now they were more focused about AFC. So one question here is it possible कि हर महीने AFC different हो? बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा हर महीने, बट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है मार्जिनली. AMH और AFC और एज हम सबको कोरिलेट करते हैं. So तीनों Right. फैक्टर, एज हमारे सामने है, प्रोवाइडेड द पेशेंट हैज गिवन अस द करेक्ट एज एंड आधार Hmm. कार्ड भी है आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए. और AMH आप करा रहे हैं, AFC आप देखेंगे तो आप कोरिलेट कर सकते हैं दैट व्हाट इज योर जजमेंट अबाउट इट. I would do Right. both, So sometimes AMH and AFC, and sometimes I only do AFC. I don't need an AMH because if it is clear cut on the scan, I don't need to counsel much. But then it's always better for documentation that you are able to, convincingly say this. So right. AMH and AFC could give you a good correlation. Good. So next query is what exactly is an ovulatory phase or an ovulatory cycle? Yes, there's a woman who's polycystic ovary, or maybe a person who's not able to ovulate. There is no egg form. There is a single egg which is not maturing. It is not ovulating on time. So that is an anovulatory cycle where ovulation is not happening at all. She might just require some ovulating agents, some medicines to have this one egg coming up or two eggs coming up, and then ovulating on time in the mid of the cycle, and then one can give a cycle injectable for rupturing of this egg, and then documenting it on ultrasound. Okay, right. So if you are in the session, please take a note. जैसे कि डॉक्टर बाली ने बोला कि नेक्स्ट साइकिल में आपका ठीक हो सकता है, बट अगेन प्लीज कीप मॉनिटरिंग योर साइकिल. डॉक्टर बाली यूजली लोग Doctor पूछते might हैं. add some medicines for that. If you're not ovulating, there might be an evaluation there. Completely, if semen analysis is normal, then some हम्म. ovulating agents, some drugs, some tablets can be added to that.
And And then we monitor. can finally say, don't worry about this condition. It could be Absolutely, easily absolutely, rectified. absolutely. Right. And one another query is related to egg quality. Is it possible to check egg quality while doing TVS? Not at all. What you see on the ultrasound is a follicle. It looks like a 50 paisa coin or a 1 rupee coin sometimes when it is in the largest size. But what is there inside the follicle is the follicular fluid. पानी होता है उसके अंदर, उसको आप जब आईवीएफ करते हैं तभी बाहर निकालते हैं। आईयूआई के टाइम पे तो आप बाहर कुछ निकाल ही नहीं रहे हैं, Right, वो तो right, सब लिखा है। अब मैं आपके सामने अगर एक एप्पल रखूं, आप डिफाइन कर देंगे रेड है, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, बट अब वो काला है या सफेद है, खट्टा है या मीठा है, वो तो बाद में ही पता चलेगा ना हमें। तो ऐसे ही right. आईवीएफ लैब में जब एग जाएगा, फॉलिकुलर फ्लूइड जाएगा, द एम्ब्रियोलॉजिस्ट इज गोइंग टू स्क्रीन, find an oocyte, and then they will be able to tell us whether it's an M1 immature, M2 a mature oocyte, or a GV geminal vesicle, which is nothing, but then it has to be wasted. So it is, these are different stages, but that can only be told by an embryologist in the lab. And while doing an ultrasound, I don't think a clinician can even visualize anything because it is a microscopic thing. 120 micron meter is the size of a human egg. So it is not visualized by the eye of a human. एंड व्हाट यू सी ऑन द अल्ट्रासाउंड इज अ फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर ये एग होता है, तो इसको तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है। राइट, सो अगर आपको किसी ने ये बोला है अल्ट्रासाउंड करके कि आपके फॉलिकल्स अच्छे हैं, एग अच्छे हैं या खराब हैं, तो प्लीज आप दे आर टॉकिंग उन अबाउट फॉलिकल्स, दे आर नॉट राइट टॉकिंग अबाउट एग देयर। eggs. Doctor, what could be the maximum size of follicle when we are trying for conception? 20 to 22 millimeters that we take it up to. Largest documented is 24 in a clomiphene citrate cycle when you're giving in ovulation induction, but usually average is 18 to 20 millimeters. For IVF फिर cycle, हाँ, so right, next question is for blood flow during the periods. She is getting lesser flow for the past 3 months. क्या ये सच में डराने वाली चीज है और डरने is it वाला तो कुछ भी नहीं होता है। इट इज जस्ट दैट इफ यू नोटिस द चेंज इन योर बॉडी और योर सिस्टम, please visit a doctor and do not ignore anything. Go and discuss. If you're having less flow, less periods, what is the age, what is the history, whether she's already had her children, she's completed her family, or she's a young girl, why she's having less bleeding, everything needs to be evaluated. First thing is, do not ignore a change in your body, and change will not come giving you a written information, it will just be observed by you. So you have to take a note of your observation and discuss with your doctor. right? And I think it is really important to note these minor changes Yes, if yes, they are related to reproductive system. yes, very much. Dr. Bali, there are many LH kits available in the market to check your ovulatory days. What is your take on those kits? I have never advised anybody for that because it only causes stress. This reminds me of another answer to your question, Purnima, that while we were discussing stress levels, while trying to be parents, some of the couples, when they work in MNC or they are having hectic work schedules, working in their offices or whatever reasons, they come and ask me. The girls have always asked me, "Ma'am, please tell me the days when I should try and I should become pregnant." I said, "Why?" No, no, only those days I'll take a note of it. I said, "You live your life normal, have sex twice or thrice a week, and do not count days. Because when you start counting days, it is only adding to your stress levels. And to your partner also, it is adding stress because you're asking, and that day the person may not be ready for it. So it is only adding pressures on your life. So I tell them that don't count days, just practice twice a week, thrice a week, and in the middle of the cycle, make sure that you all are available, you're there together, and you're trying for it sincerely. So these This LH is kits, a very valid point. yes, Right. it's subconsciously you're adding stress levels, you're increasing your own Right. stress level. So why follow it? Live your life normal, have sex as a part of your life and not just to conceive. So if you do that, I mean, it will lot of problems will be sorted out. You may not need a Right. fertility specialist at all. You will only need a fertility host. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you. We can say that, but nay, doctor as experienced as you is always needed in the society. We cannot deny the fact. बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं, हमें समझ नहीं आती. एंड दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट बिकॉज tracking your fertile days and just It's not a good practice. You should know about right, it, but I think you should not live by it all the time. Knowing is fine, but living by it, I don't agree. right. And nowadays it's a common practice because मुझे Yes, नहीं याद कि हमने कभी ये LH किट या फोन में ऐप डाउनलोड करने का कभी सोचा भी होगा. socha bhi ho So so it's a new thing and it's a new trend. You know, this generation is different, I feel. right, right, right. They will come to us So sometimes, you know, Purnima, they will come to us. I got a scan done outside by that doctor, and this doctor mhm, said, you are now ready for an embryo transfer. So you do it. I said, according to me, it is not to be done. So they said, we are telling you, we are giving you written consent. So sometimes I have to ask them, you've come here to take our advice or give us the orders. You sometimes don't know. They are so hell bent upon signing the document against your advice and saying, just do it. So this is how it mm, is. So sometimes you have to just understand, relax. This whole physiology, you need to know that a normal couple also doesn't conceive every month. There is a fecundity rate in humans. It is 10%. Only few couples will, conceive in the very first year of their marriage. Some will take more time. Some will conceive by the end of 3 years. And if there is no factor found, well, it is labeled as unexplained infertility. So there is no need to panic sometimes. It is just wait and be patient, try and figure out, try and reassure yourself with your doctor. Everything may be normal and you are yet not able to conceive. So there is something right. called as unexplained infertility. बिल्कुल और मुझे लगता है ये अनएक्सप्लेन सबसे ज़्यादा डराने वाला वर्ड है बिकॉज़ नहीं डराने वाला नहीं है nobody इनफैक्ट रियश्योरिंग है कि सब नॉर्मल है बट हो नहीं रहा हो वो जाएगा आई फाइंड इट नहीं मोर रियश्योरिंग टेक इट दैट वे बिल्कुल एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल पॉजिटिविटी. यस बिल्कुल अनएक्सप्लेन से आपको डरना नहीं है. अगर कुछ निकला ही नहीं ना हमारे टेस्ट में सब नॉर्मल आया सो इट्स अ गुड न्यूज टेक इट दैट राइट, वे राइट. डॉक्टर इट्स also could not वन find it out so it's okay you have to इट्स reassure yourself. right. So, Dr. May month is related to mental health, mental awareness. So, हम सब को पता है, हम सब मानते हैं कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी लाइफ में, कहीं न कहीं हमें इनफर्टिलिटी की तरफ खींचने के लिए. So, what you suggest and what are your suggestions for our members right now कि कैसे इस हर महीने कहीं न कहीं वो डेट काउंट होती है कि अब मेरे पीरियड्स आने वाले हैं और जब वो पीरियड्स आने वाले होते हैं उनसे 2-3 दिन पहले हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है. एंजाइटी तो आप किस हिसाब से ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं या अभी लाइव सेशन में व्हाट यू सजेस्ट फॉर आवर But ऑडियंस? just to talk to your own self and say that I have done my best and I will just be patient because nobody knows when a life has to come. Science has its own limitations. IVF is a science. As I said, India is proud to be on the map of the world or second as a country, right? So we should be proud as Indians that our country was there as a second country. So the fact is that the science has its limitations, yes, but nature also plays its role. You have put in your best, your doctor has put in your best, so just be patient, your time will come. And follow it up patiently. By adding stress to this, nothing is going to change. So only thing is you're going to say you're worrying yourself. So you have to talk to yourself on daily basis and say happiness is a state of mind. What come may, whether I become a parent or not, I will be a happy soul because first I need to be happy, then another life comes into my life. So first make sure that you endure all the stress, keep your mental state going and tell yourself, I am a strong human being and I will endure it and I am fine. I will be happy. Every day morning, you need to reassure yourself and tell yourself, I will go on with this and I will beat infertility and I will get a child, what come may. So every day reassuring yourself and giving positive commands is one thing. And I tell them to read this book called Secrets. I tell each patient of mine to read first 20 pages of this book called Secrets by Rhonda Right. Byrne and follow the law of attraction, this manifestation that, whatever you manifest, you get it ultimately. So be after it.
and in a positive way. So these first 20 pages of this book, Secret by Rhonda Byrne, is my advice to all my patients. And I tell them I don't even call you patients because neither you are physically ill nor you are mentally ill. You are a client to me, you are a friend to me, and we are here to tell you that this journey we shall, cross it together. For you also it's important, for us also it's important. So just be patient. There's no need Right. to. But I make So, them read this 20 pages of this book. And I would interesting advise book. everybody. Yes, we Unless they also. read the first 20 pages, I don't see them in the next OPD if they are too stressed out. So that is a homework given to them from my OPD. Right. Then they So have to about. practice it and believe it. नहीं बिल्कुल ठीक. I also read this book and interesting, and I can say that it gives you something back. It gives you back and it gives you the courage to go on. And this is the pattern of thinking that one is supposed to follow. Manifestation is there. So Is there this is how right? you have to follow it up. Right. And then Dr. of course Bali. add any time, and you have to add one hobby activity, and you have to add reduce your stress levels by whichever way. And if any family member environment is not conducive, then we will indirectly or get into it and try to help them out by counseling the other people or the partner of the patient. That Right. looks Counseling is stress, important very part. very important. We do take up that. And don't hesitate to ask your doctor, or don't hesitate from anyone. You seek a help. And I always tell them that look, it is the nature of a woman to cry, to talk to her friend, her mother, or her colleagues, that that she's going through so much. As the one mother, one martyr we will make of ourselves, either it's me or you or any woman for that matter. It's our nature to talk to everybody about our problem and then cry it out at times. But a person who's coming along, your husband of the patient, husband of the woman there in question, he's also wanting to be a father. He's also wanting to be a parent soon. But then who looks after his stress levels? I always ask the girls in my room that look, it is not only you who's wanting to be a mother. Your husband also wants to be a father. Does he cry? He cannot cry in front of you because you are already stressed out. He cannot talk to his parents because he's not allowed to talk. He will not go and discuss something so personal with his friends. So he's the one who's suffering more than the girl Right. there. So I always tell her that look, you're not alone in this journey. Your life partner is a part of this whole thing. So try to share between the two of you and make sure that you don't get stressed out, because even he is going through it. And he will never be able to speak to the doctor also. बिल्कुल. So Right, because in these emotional things, I think females are more open, whereas males are and not yet open. we all feel that we are the only ones who suffer. Nobody else suffers on the earth. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. I do agree with you. And viewers, if you think कि आपका stress level, आपके anxiety issues आपको तंग कर रहे हैं, please do connect with us. We have a very good in-house counselor, and we really want you to work on your stress levels. स्ट्रेस है तो सब कुछ है, स्ट्रेस नहीं है तो बहुत कुछ है. इस बात को हमेशा याद रखिए. डॉक्टर बाली, नेक्स्ट क्वेरी इज रिलेटेड टू डीएफआई. आजकल बहुत सीमन एनालिसिस के बाद एक तरफ हम चलते हैं जब डीएनए फ्रेगमेंटेशन की बात आती है. सो आपके हिसाब से कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डीएफआई करवाना चाहिए, या कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बाद यू सजेस्ट फॉर दीज It is टेस्ट? only there for counseling when we are doing semen analysis, semen parameters are seen in the lab. But what is the treatment if you find fragmentation or whatever? You have to add antioxidants to these people. So we always advise antioxidants in any case in our treatments. It's only reassure, counseling helps and it is documented so that tomorrow any results we are able to point out and just put them on antioxidants. We are not doing for all patients, but if we need to do the semen parameters are haywire, then we like to do a DFI and put the report there and counsel them. And any count which is less, any parameter, any previous failure of IVF they've had, then we would like to do a DFI. सो फीमेल्स के बारे में अगर हम कहें तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिनको करना ज़रूरी है, और जिन टेस्ट को अगर कुछ पैरामीटर्स रॉन्ग हैं तो वी रियली नीड अ टाइम टू रेक्टिफाई दोज थिंग्स. व्हाट अबाउट मेल्स? अगर उनमें कुछ पैरामीटर्स ठीक नहीं है तो मिनिमम कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए हमको मेल पैरामीटर्स को ठीक करने के लिए? 8 weeks to 12 weeks. ओके, ओके.
बट ये तो बहुत बायस्ड कंडीशन हो गई मेल और फीमेल्स के साथ. होती है. So nature is also discriminating. We can say that. Different systems work there. Right. So Dr. Jyoti, one another question: what could be the reason for recurrent miscarriages? There are multiple reasons for recurrent miscarriages. First could be a genetic cause, there could be an abnormality in the uterus, there could be a septum, there could be some other factor there. It will depend from case to case as to what is the evaluation there. Okay. It, whole history will have to be taken. The whole parameters have, whether it was a first trimester recurrent abortion, second trimester causes will be different. What history is there in that setting, I'll be able to tell you. But sometimes it is genetic causes, uterine abnormalities, some immunological reasons there. So depends upon what history we are talking about in this whole context. Okay, right. The lady who is asking this query, her husband is suffering from hypertension and diabetes. So, doctor has suggested few genetic tests for her. So, she is asking, is it really important for her to go ahead with these genetic tests? Maybe Because the she had history. multiple Yes. miscarriages. Yes, there could be a reason. That is why her doctor has asked her. So, whatever history is there, I'm not sure. But if the doctor has asked for some study of these things, I think it is to be done. Okay. So if you are in the session and you heard the response from Dr. Bali, please go ahead with the test doctor has suggested and don't worry. जितनी जल्दी डायग्नोज होगा हम कहते हैं उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट होगा. So next we have query related to clots in during periods. So is it really bad thing when you are getting clots during period flow? Yes, it is not a normal thing to happen. Excessive clots will cause excessive bleeding. That means you say blood is getting collected, then forming a clot, then coming. What age of the patient? Again, history is important, and evaluation is important. Maybe she's having dysfunctional uterine bleeding. Maybe she's having fibroid uterus. It certainly needs to be seen by the doctor because ultimately, if she keeps bleeding excessively, she will turn anemic. Every month, if there is excessive blood loss, there will be anemia setting in. So that is again impacting the general health of the lady there. So anything which is not normal, it needs an evaluation. It needs to be there needs to be a consultation with the gynecologist. Right. If you have any issues, any concerns regarding your periods, please don't say कि next month देखा जाएगा. It's you really need to consult with your gynec. ऐसा नहीं है we are telling you to go straight away to the fertility specialist. Just consult your gynec for your irregular periods or for heavy bleeding or scanty periods or even clots during periods. Uh, so, uh, Okay, so one query that how many cycles of IUI can we do? Usually we take up, depending again on the history, 3 to 4 cycles are advised. But in a donor insemination, one can go up to 6 cycles also. Okay, so number varies according to the factors The cell there. cycle, 3 to 4 cycles is usually what we get. And Dr. Bailey, we just talked about this embryo pooling in that question. So, what could be the time gap between two stimulations, or we can try one after the another month for It the can be stimulation? tried. There's something called as dual stimulation, which some practitioners do believe in, and it can be taken up after a gap of 1 month. It can be taken up back to back if your doctor feels it is they want to do a dual stimulation. It's individual again. And any bad effect or any. Not really, not really, not ओके. really. सो इफ यू आर इन द सेशन प्लीज आपने सुना होगा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा आपकी बॉडी पे एंड एज योर डॉक्टर इज सजेस्टिंग कि आप एक के बाद एक ले सकते हैं देन प्लीज गो अहेड एंड डोंट वेस्ट टाइम. सो डॉक्टर बाली एनी पार्टिंग नोट फॉर आवर व्यूअर्स? Again, I would say stress levels need to be managed strongly. One should be aware that yes, I have got to do it. Once you tell yourself, self, I will do it, you will certainly do it. Nobody likes to fail in doing what you've thought of. So it is about you making a commitment to your own self.
Finding me time is important, 8 hours of sleep, good balanced diet, including vitamin D3 and vitamin B12 for vegetarians, and meeting your doctor, trying to understand everything clearly and following it to the T. And being patient is the key to success in fertility. राइट। एंड जैसे कि हमने शुरू में कहा, चीज़ें बहुत छोटी हैं पर कहीं न कहीं या तो हम मिस करते हैं या भूल जाते हैं। आई थिंक आज के सेशन के बाद कमिंग फ्रॉम अ नोन डॉक्टर सच इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट कीजिए एंड डोंट मिस दिस बिकॉज़ चूज़िंग अ राइट डॉक्टर इज़ रियली इम्पोर्टेंट I think एंड every doctor is a right doctor in their own way, and every doctor is a good doctor, is my answer to right. that. Right. And but please don't delay the treatments. This is really Yes. important because age is catching up. और आज के टाइम में हम शायद सोचना ही एक बड़ी एज में जाके शुरू करते हैं। मे बी दिस इज द मेन फैक्टर नहीं, व्हाई वी preparing को oocyte freezing करा लीजिए, और you can take your time, as I said in the beginning of the session, to find the right partner, settle your career. Your years are limited as a woman, so go for oocyte freezing. It's a safe technique. Any IVF center can provide it to you. Come forward and ask for it. It's like an LIC policy, so one must take it, one must utilize it, and you will have your own genetic child at a time when you are ready for it. बिल्कुल एंड हमारे सेलिब्रिटीज आर आल्सो डूइंग दिस सो वी कैन डू इट वी कैन फॉलो द ट्रेंड वी कैन से It's a science to be followed and understood. राइट राइट डॉक्टर ज्योति आपसे बहुत मजा आया बात करके एंड आपने जितने भी चीजें बोली जितने भी पॉइंटर्स हमें दिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम उन चीजों को अपनी लाइफ में उनको जरूर लाएं एंड व्यूअर्स प्लीज डोंट मिस द बिगनिंग ऑफ द सेशन जहाँ पे डॉक्टर ने बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बोली हैं One एंड दिस more thing I'd सेशन like to add. One more thing I would like to add, Purnima. IUI, it's a simpler treatment. When people get into IUI, your doctor has advised IUI to you. Please remember, success rate of an IUI cycle is no magic. Even IVF, it is 50 to 60% per embryo transfer. I'll explain what I mean to say by this. IUI, when we are doing it, is 10 to 15% result in the best of the hands, best of the clinics, anywhere you go. सो 10% मीन्स मैंने 10 IUI किए इस महीने अपनी क्लिनिक में, एक पेशेंट प्रेग्नेंट होगा, 9 फेल होंगे। अगले महीने 9 को किया, एक प्रेग्नेंट होगा, 8 फेल होंगे। थर्ड मंथ तक जाते जाते 2 और निकल जाएंगे। बाकी जो बचेंगे दे विल रिक्वायर फर्दर इवैल्यूएशन। एंड IVF, supposingly one patient made good 6 embryos, डे 5 embryos, हमने उनको 3 जगह फ्रीज कर दिया, दो दो करके, दो दो ब्लास्टोसिस्ट करके। सो यू हैव 3 attempts from one IVF cycle. So be patient. Which attempt will click, the doctor doesn't know, and even you do not know. We would want the first attempt to click, but in case नहीं होता है तो पूरी cycle आपको repeat नहीं करनी है. Take a break of 1 or 2 months. Again, a transfer cycle can be taken up, which is very simple on tablets and preparing the lining and transferring it back, because transfer is like a simple procedure without anesthesia. So be patient, follow your doctor. 50 to 60% per attempt all over the world is the result of IVF. It is not magic, it is not 100%, and IUI is 10 to 15%. So if your doctor has said IUI, please complete the treatment with IUI. You may just conceive with a simple treatment, but be patient. Don't jump straight to IVF, because IVF is also not 100%. What if it fails? not Then you again come back. So follow the advice of your doctor, understand things, and then do it, and be patient there. right. Trust the person sitting on the other side of table and who is your doctor. That is really important. Trust is the important thing. So So thank you, Dr. Bali. Thank you so much for joining us today. again, And I know आपका हाँ जी please. thank you, Purnima, for inviting me. It was a wonderful session with Fertility Dost, and I thank my hosts and thank you personally, Purnima, for this. Thank It you, was a ma'am. pleasure. Thank you, doctor. Thank you. Thank you so much. Thank you, UNS, once again for giving us such a wonderful doctors for such wonderful session. Thank you, ma'am. Have a good day. Thank you, Purnima. Have a good day.